Hello dear students, today we are going to see some important terminology belonging to electrical machinery which would be very essential for having the clarity of concepts of armature reaction in DC machine. So now see please. So the completion of this short video session will have the clarity of concepts for several terminologies which are required, which are very essential for the clarity of concepts of armature reaction in DC machine. These terminologies are polar axis or direct axis or D-axis, then interpolar axis or geometric neutral axis or quadrature axis, or another name is your Q-axis in short. Then another term is your magnetic neutral axis or MNA, and another term is your pole tips, or you must have the concept of pole tips. In terms of pole tips, you have to state the statements of or for the armature reaction in a DC machine, both for the motoring mode as well as generating mode. So you must have the clarity of concepts for the pole tips, both for leading pole tip as well as trailing pole tip. Okay, so first you see concept of direct axis or polar axis. See, polar axis is the axis or line passing through pole centers or line passing through pole to pole is called your what? Direct axis or polar axis. Similarly, quadrature axis or GNA is the axis or line lying exactly midway between two adjacent and opposite poles. So see please, these are the two poles. We have considered two pole DC machine here in figure 1, and in figure 2 we have considered 4 pole DC machine. This is what the axis or line passing through pole centers. This is what your north pole, this is your south pole. So this particular axis would be called your D-axis or polar axis. This is what your D-axis or polar axis. Later on say, here in case of 4 pole DC machine, this is your D-axis and this another D-axis. So in 2 pole machine, one D-axis, one direct axis exists. In 4 pole machine, 2 D-axis exists. Remember please, the position of this particular D-axis fixed as long as the physical positions of the poles is fixed. Meaning is what? The position of the direct axis or polar axis depends on the physical dimension of the machine or the physical positioning of the poles in the machine. And once the machine is designed from the manufacturer end, means during operation, with the increment or decrement of loading, with a change in loading, the position of D-axis would not change. Okay. Now go ahead and let us have the concept of quadrature axis or Q-axis. Say Q-axis is the axis passing midway between two adjacent poles which are opposite in polarity. In heteropolar machine, you know the adjacent poles are opposite with their polarities. See, these are the two opposite poles. This is your north pole, south pole. The line or axis passing exactly midway between two poles. So this is the line or axis, this is the line passing exactly midway between two poles. So this is your Q-axis or quadrature axis. The one is what? In case of 4 pole machine, say this would be your one of the Q-axis and this would be your another Q-axis. So 4 pole machine में 2 Q-axis lie करते हैं. So these are your 2 Q-axis. Meaning is what? For each pair of poles, there would be one D-axis and there would be one quadrature axis. Remember please, the quadrature axis always in quadrature with the D-axis. Means the angle between quadrature axis and D-axis would always be 90 degree electrical. आप जानते हैं each of the pole is belonging to electrical degree of 180 degree electrical. Means pole to pole electrical distance is what? 180 degree electrical. So as the quadrature axis is passing exactly midway between two adjacent and opposite poles,
So what is the angle from D axis to Q axis? This angle would be 90 degree electrical. This is not the physical or geometrical angle. This is your electrical angle. Remember please. Similarly here you see the angle between or the angle or the distance between pole to pole is what? 180 degree electrical. And say so the angle between D axis and Q axis will be what? 90 degree electrical. देखिए you might get confused here. 4 pole machine में हमको दिखता नहीं एंगल 90 डिग्री है तो 45 दिख रहा है like this. बट ऐसा नहीं. देखिए पोल से पोल का बीच में दो एडजेसेंट पोल के बीच का इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है. सो एग्जैक्टली दोनों के बीच से पास होने वाला लाइन है आपका Q एक्सिस. सो D एक्सिस से Q एक्सिस के बीच का इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल. मींस जो Q एक्सिस है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल को इक्वली डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में. सो D एक्सिस और Q एक्सिस के बीच में बनने वाला इलेक्ट्रिकल एंगल 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा. दिस वुड बी ऑलवेज करेक्ट. सो इसीलिए तो Q एक्सिस का इसीलिए तो दिस इंटरपोलर एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड quadrature axis or Q axis, as this particular axis is always in quadrature with respect to D axis in terms of electrical degrees. Okay, not geometrically. Okay, so this is what the concept of D axis and Q axis. Please do remember the positions of D axis and Q axis is fixed as long as the physical dimension of the machinery's component is fixed. Means there is no effect on the position of these two axes with the change in loading or with the change in the output parameters. Say let us have concept of MNA. So have a look here. Say MNA is your magnetically neutral axis. Magnetically neutral axis actually means it is the axis or line along which the resultant flux component is zero or there will be no component of the resultant flux, so that whenever conductor is lying along that particular axis, the induced EMF in that particular conductor would be zero only. So MNA कैसा एक्सिस है जिस एक्सिस के अलॉन्ग जब कोई भी कंडक्टर लाई करेगा उस कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ जीरो होगा. कारण इसका यही होगा कि इस खास एक्सिस के अलॉन्ग कोई रिजल्टेंट फ्लक्स का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, एमएनए पोजीशन पर होने वाला इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए लोग दो केसेस कंसीडर करने जा रहे हैं. ऐसा पहला केस में कंसीडर करेंगे व्हेन द मशीन इज ऑपरेटिंग एट नो लोड कंडीशन और दूसरा केस में कंसीडर करेंगे व्हेन द मशीन इज ऑपरेटिंग ऑन लोड कंडीशन. अब आप जानते हैं जब मशीन नो लोड कंडीशन पर काम करेगा पर्टिकुलरली डीसी मशीन, देन ओनली फील्ड फ्लक्स इज सपोज्ड टू बी एक्टिव. मींस ओनली फील्ड फ्लक्स का एग्जिस्टेंस होगा, आर्मेचर फ्लक्स जीरो होगा बिकॉज आर्मेचर कंडक्टर्स वुड बी नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर केस एज यू आर कंसीडरिंग नो लोड कंडीशन. ओके, सो पहला केस पहले कंसीडर करते हैं, देन दूसरे केस को देखेंगे. सो सी in case 1 at no load IA is equal to 0, that is field flux IF only exists. Field flux अकेला exist कर रहा है. We have considered two pole DC machine, the simplest structure of the two pole DC machine. Okay, देखिए यहाँ पर दिखाए हैं आर्मेचर कंडक्टर्स को सर्कल without dot and cross inside it. Without dot and cross inside circle means they are non-current carrying armature conductors. Means armature conductors कोई current carry नहीं किए हुए हैं. Only field poles को दिखाए हैं north and south. Means only field flux का existence है. अब field flux का direction जो होगा वो from north pole to south pole होगा. They are directed towards south pole, originating from north pole in the air gap region. So field flux को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That is field flux vector and this is what your field flux vector represented here. अब field flux जो वेक्टर दिखाया गया है that is exactly perpendicular or in quadrature to GNA है. अब
GNA के अलोंग फील्ड फ्लक्स का जो वेक्टर है, फील्ड फ्लक्स वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। क्वाड्रेचर कंपोनेंट of this particular vector would be equal to 0. Means along GNA the component of the field flux would be 0. So this GNA at this moment would itself called MNA because इस GNA के along जो है field flux का कोई component exist नहीं कर रहा है और field flux का component जो है वो 0 है। और देखिए keep in mind अंडर दिस कंडीशन जो कुछ भी रिजल्टेंट फ्लक्स है वो phi f ही है, phi a 0 है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होना है दैट इज phi f प्लस phi a। रिजल्टेंट फ्लक्स जो होना है फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स। अब आर्मेचर फ्लक्स है ही नहीं तो जो कुछ भी फील्ड फ्लक्स है वही आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है इन केस ऑफ नो लोड कंडीशन। ओके, सो दिस इज व्हाट इन केस ऑफ नो लोड कंडीशन। अब नो लोड कंडीशन में दिन क्या बोलेंगे? MNA coincides with GNA and along MNA if conductor is placed no EMF will be induced as the resultant flux component along this particular axis is 0. So now cos 90 would be equal to 0. So phi f cos 90 would be equal to what? 0. So MNA के along जो phi f का कंपोनेंट है वो 0 होगा। बात ध्यान रखेंगे। सो स्टेटमेंट आप बोलेंगे अंडर नो लोड कंडीशन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस coincides with GNA. Okay, now let us have a look for the condition of DC machine on load. Okay, so on load condition जब कंसीडर कर रहे हैं तो उस समय दोनों का इफेक्ट कंसीडर करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ बोथ IF एंड IA। मींस जब फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मींस फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तब MNA का पोजीशन में क्या फर्क पड़ेगा हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसको देखने जा रहे हैं ना। फिर से वही टू पोल मशीन कंसीडर किए हैं। इसमें बस अंतर इतना है कि आर्मेचर कंडक्टर्स को करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर किए हैं, सो कि करंट कैरी किए हुए हैं। अब इसलिए हम जनरेटिव मोड ऑफ ऑपरेशन कंसीडर किए हैं जिसमें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का कंसीडरेशन है। अब आर्मेचर को जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्राइम मूवर, देन आर्मेचर कंडक्टर्स में EMF इंड्यूस्ड होगा एंड ऑब्वियसली अगर लोड से भी कनेक्टेड होगा देन करंट का फ्लो होगा थ्रू आर्मेचर कंडक्टर्स। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर्स लाइंग इन ए पर्टिकुलर पोल रीजन कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल की मदद से आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को डिटरमिन कर सकते हैं। सो सी प्लीज हियर कोई भी एक कंडक्टर को कंसीडर करिए इन द नॉर्थ पोल रीजन, उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को कंसीडर किए हैं जस्ट अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। हाउ टू अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल? सी, thumb will be dictated in the direction of the velocity vector or the force vector and forefinger would be in the direction of the field vector. The middle finger would point or will show the direction of the induced current or induced EMF. So see please here, the direction of the induced current in the conductor lying in north pole region is inside to the plane of the boat or into the plane of the boat, means that will be represented by circle with cross. So जितने भी कंडक्टर्स होंगे नॉर्थ पोल के रीजन में सभी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट को दिखाया जाएगा सर्कल विथ क्रॉस से। आप ये बात ध्यान रखेंगे प्लीज। डू रिमेंबर वन पॉइंट हियर, दिस आई एम stating right now, the conductors lying in one pole region carries current in one particular direction. When this conductor will lie in the other pole region, then the direction of the induced current through them will be reversed. Means अगर क्रॉस्ड कंडक्टर्स है नॉर्थ पोल के रीजन में, वही कंडक्टर जब साउथ पोल के रीजन में जाएंगे देन उन कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला करंट जो है वो बदल जाएगा एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑब्वियसली बाय डॉट। हाँ, अगर क्रॉस्ड कंडक्टर हैं सब नॉर्थ पोल के रीजन में, देन वही कंडक्टर अगर नॉर्थ पोल के रीजन में होंगे देन वो क्या होंगे? डॉटेड कंडक्टर्स होंगे। Okay, so likewise here also the direction of the induced current is determined in the armature conductors lying in south pole region. Sorry,
ना सब कंडक्टर्स आर्मेचर कंडक्टर्स के थ्रू करंट का डायरेक्शन जानते हैं, देना आप फ्लक्स का डायरेक्शन भी जानते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स रूल और सिंपली स्क्रू रूल। क्रॉस्ड कंडक्टर्स आर हैविंग द फ्लक्स विल कंप्लीट देयर पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसी तरह से डॉटेड कंडक्टर का जो करेस्पॉन्डिंग फ्लक्स होता है कंप्लीट देयर पाथ क्लोज्ड पाथ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉक जितने भी क्रॉस्ड कंडक्टर हैं सभी के करेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पाथ को कंप्लीट करेंगे। अप्लाइंग फ्लेमिंग्स रूल और स्क्रू रूल ऐसा यू कैन हैव द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। नेक्स्ट उसी तरह से डॉटेड कंडक्टर्स का जो करेस्पॉन्डिंग फ्लक्सेस होंगे वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना क्लोज पाथ कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आर्मेचर फ्लक्स as a whole, armature flux or resultant armature flux is directing in downward direction along the brush axis. You see please, along the brush axis, that is also called armature axis. Along this brush axis the resultant armature flux is directing in downward direction. So armature flux को जब वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स वेक्टर को दिखाएंगे in downward direction just along what brush axis के along है और directing in downward direction here for this particular diagram. अब armature flux downward direction में and field flux is from left to right here. So this is what your field flux direction, this is what your field flux direction north to south. अब देखिए armature flux exactly क्या कर रहा है, field flux को क्रॉस कर रहा है। So by applying a parallelogram law of addition, what would be the resultant flux direction? Resultant flux would direct it along this particular direction. This is what the resultant flux. Phi resultant is what? Phi resultant is the vector sum of phi a plus phi f. This is what the phi resultant. So phi resultant जो resultant flux है वो distort हो जाएगा, वो distorted हो जाएगा and that will be directed along this particular direction. अब resultant flux जो है इसका direction इस खास direction में हो जाएगा like this and now see you know the axis or line perpendicular to the resultant flux where the component of the resultant flux is zero called MNA. So MNA का position क्या होगा? This is what the MNA जो है perpendicular होगा resultant flux का, this is what your MNA. So MNA जो है MNA शिफ्ट कर जाएगा GNA से। नो लोड कंडीशन में MNA जो है GNA से कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन ऑन लोड कंडीशन में रिजल्टेंट फ्लक्स जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्मेचर फ्लक्स इन एडिशन टू फील्ड फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो डिस्टोर्ट हो जाता है, रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है एंड रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन बदलने के चलते क्या हो जाता है, MNA का पोजीशन शिफ्ट कर जाता है। अब MNA का पोजीशन शिफ्ट होने का क्या मतलब? सी MNA पोजीशन शिफ्टेड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द एक्जिस्टेंस ऑफ दिस क्रॉसिंग आर्मेचर कंपोनेंट। सो जो आर्मेचर फ्लक्स का जो क्रॉसिंग कंपोनेंट है, फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करने वाला कंपोनेंट है, उसके एग्जिस्टेंस करने की वजह से MNA का पोजीशन शिफ्ट हो गया फ्रॉम GNA। एंड ये डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग क्या है? डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ MNA पोजीशन is towards the direction of rotation of generator rotation. So generator का rotation clockwise में कंसीडर किया गया, so clockwise direction में ही चलिए शिफ्ट कर रहा है MNA का पोजीशन। अब देखिए अगर आर्मेचर करंट ज्यादा होगा, मतलब अगर लोडिंग ज्यादा होगा, अगर लोडिंग ज्यादा होगा ऑब्वियसली करेस्पॉन्डिंग फील्ड फ्लक्स भी ज्यादा होगा। सो करेस्पॉन्डिंग फील्ड फ्लक्स ज्यादा होने का मतलब क्या? फाई ए का वैल्यू जो है वो ज्यादा, फाई ए अगर ज्यादा होगा कहने का मतलब फाई ए पहले से ज्यादा होगा, दैट इज योर फाई ए डैश। अगर लोडिंग इंक्रीज करेंगे फाई ए इंक्रीज होगा, फाई ए इंक्रीज होगा, व्हाट अबाउट योर phi r position? Phi r position would be like this. This is what your phi r dash. अब phi r dash ये है resultant
फ्लक्स नया रिजल्टेंट फ्लक्स का पोजीशन ये है, देन this would be what the new MNA position with the increment in loading. So loading increase करने से MNA का पोजीशन और शिफ्ट करता है किस डायरेक्शन में, रोटेशन के डायरेक्शन में. More the loading, more will be the shifting of or shifting angle of MNA with respect to GNA, and the shifting of MNA is same as in the direction of the generator rotation also. आप ये बात जानते हैं, generator rotation if considered in clockwise direction, then the motoring mode rotation should be considered in counterclockwise direction for the same direction of armature current considered. Yes or no? So theoretically आपका consideration क्या होता है, motor rotation direction is opposite to the generator rotation direction for the same direction of armature current consideration. अगर ऐसा है then क्या बोलेंगे, with the increase in loading MNA shifts its position from GNA in the direction same as in generator rotation direction and in the direction opposite to the generator rotation direction. And say meaning is what, the position of MNA depends upon the loading or not. Yes, it is depending upon loading. So it is not only depending upon the position of the poles, it also depends upon loading. With the increment in loading, the shifting angle of the MNA position from GNA will increase. Okay, so now the MNA position would be like this would be perpendicular to the resultant flux. Now later on we'll see the concept of armature reaction. Okay, so very important concept. Let's see the next session. Okay.